जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम, राम राम। सभी भाई बहन से राम राम, स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सिखा लीजिए। जय हो, जय हो, सिखा लीजिए, जय हो, जय हो। थैंक यू सभी भाई बहन का, बने रहें, कमेंट करते रहें।
थैंक यू। बने रहें सभी भाई बहन, कमेंट करते रहें, लाइक को लाइक कर दें, लाइक को लाइक कर दें प्लीज़। बने रहें, कमेंट करते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।
थैंक यू प्रियंका बहन, राम राम। लाइक नहीं मिला है आपका, लाइक कर दो। 6:12 पर मैंने कमेंट किया है। ठीक है, जी हाँ, ठीक है। मेरी आवाज़ अगर सुन रही हो तो कमेंट भी करो और लाइक भी कर दो।
प्रियंका जी, आप कमेंट भी नहीं की और जो है लाइक भी नहीं की। इतनी बार मैं आवाज़ दी, कहाँ चली गई?
थैंक यू पूनम बहन, थैंक यू। प्रियंका बहन का जो है नहीं मिला है। प्रियंका बहन पता नहीं कहाँ गई हैं। इतनी देर से मैं आवाज़ दे रही हूँ कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नहीं किए। लगता है एक दूसरे का सपोर्ट करते करते दूसरे तीसरे का करते हैं लोग।
राम 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 राम, जय श्री राम, राधे राधे।
थैंक यू अजय बाबू, थैंक यू, स्वागत है, वेलकम है। और बताइए क्या हाल चाल है, और घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है बाबू। कट रहा है। माता जी कैसी हो आप? अरे बाबू मत पूछो, आज 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, तबीयत डाउन चल रहा है। थैंक यू। इसीलिए तो हम किसी के लाइफ में नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक नहीं चल रही है, नहीं बाबू, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बहुत परेशान चल रही हूँ इस समय बहुत परेशान चल रही हूँ। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो मन करता है यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, करता है। तबीयत भी नहीं सही रहती, इसी में परेशान और रहती हूँ। सपोर्ट करो, लाइव में जाओ। आराम किया करो, किसी की लाइफ में मत जाया करो। अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी किसी के लाइफ में, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के लाइफ में नहीं जाऊंगी। मेरे पास जो सपोर्ट आईडी है वही लगा के रख दूंगी, किसी को आना होगा आएगा, नहीं तो नहीं। तबीयत भी नहीं सही रहती तो किसका सपोर्ट है? पता नहीं क्या हुआ है बाबू, कुछ समझ में नहीं आता है। इतना खाते पीते हैं तब भी पता नहीं क्या हो जाता है। आ रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आज से किसी को कोई सपोर्ट अच्छे से करते भी नहीं है, और जो है जाओ उसी में परेशान रहो, किसी के लाइफ में नहीं जाएंगे। चाहे कोई आएगा या ना आएगा, जो जब तबीयत ठीक होगा वीडियो सीडियो जो बना पाएंगे तब कुछ बनाएंगे।
राम 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 राम। बने रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू प्रतिमा बहन, थैंक यू। स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। और बताओ कैसी हो, क्या हाल चाल है। ऑन हो बहन, ठीक है, ऑन रहो, ऑन रहो, ऑन रहो, ऑन रहो।
बड़ी दीदी प्रणाम, राम राम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छी रहो, खूब आगे बढ़ो। वॉच टाइम पूरा हुआ? वॉच टाइम आपका अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कम है। नहीं पूरा हो रहा है दीदी। आपकी लाइव चल नहीं पाती, आपकी चल भी नहीं पाती। जो लोग सपोर्ट करते हैं वो आपको मिलता भी नहीं है, और अच्छे से लग रहा है कोई सपोर्ट भी नहीं करते हैं। थैंक यू पूनम बहन, थैंक यू। राधे 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 राधे। वही बात है बहन, हाँ वही चीज़ है, अच्छे से लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और दोपहर में आप चलाते हो गोल गोल घूमने लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सब लोग यही सोचेंगे कि लाइट चल नहीं पाती है तो हम लोग सपोर्ट ही क्या करें। हाँ बहन, मेरा तो अब मन करता है छोड़ ओड़ दूँ, लेकिन वही फिर सोचती हूँ कि जब तबीयत सही रहेगी तो फिर बैठ के घर में क्या करेंगे, इसीलिए थोड़ा चलाती रहती हूँ। और जिसका सपोर्ट ना करने जाओ तो फिर आएंगे नहीं। भाई ये तो सही है, काहे को आएंगे, छोड़ दे तो हम लोग से बात कैसे करेंगे। अरे पूनम बहन, तबीयत बिल्कुल सही नहीं चलती है, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मन नहीं करता है। कल तो एकदम मन हुआ कि अब छोड़ दें, लेकिन जो पहले का वीडियो था वही सेट कर दी और अपलोड कर दी। सारा दिन ऐसे जैसे तैसे कर पाती हूँ, करती हूँ, ऐसे पड़ी रहती हूँ, दवा खा रही हूँ, मन बहुत दुखी रहता है, इसीलिए तो नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग का याद बहुत आता है ना, तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए ज़्यादा लोग का सपोर्ट भी नहीं करने जाती हूँ। केवल प्रियंका बहन, प्रतिमा और ये आप, पूनम बहन और एक विजय भाई, बस यही 3-4 लोग का सपोर्ट, फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहता है। और रविंदर भैया की लाइव में कभी कभी पहुंच जाती हूँ, 2-4 कमेंट, 10 कमेंट कर देती हूँ। बाकी मैं किसी का सपोर्ट इस समय ना करती हूँ, मोबाइल छूने का मन ही नहीं करता। मोबाइल जो है छूने का मन ही नहीं करता, क्या करें। राधे 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 राधे। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। राम 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 राम। वही 3-4 लोग का मैं गाना भी फुल वॉच करती हूँ।
एक जो है अंका बहन, प्रतिमा बहन, पूनम बहन, मीनू सिस्टर, बस यही 4 लोग का मैं गाना भी लॉन्ग वीडियो फुल वॉच करती थी। रेखा बहन का देखती थी और कभी मुड़ के मेरा कोई वीडियो आज तक देखी ही नहीं, इसलिए मैं एकदम छोड़ दी उनको। बने रहें आप लोग। बहन क्या हुआ है, अब सारी दिक्कतें बता रही हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। ब्लड कम है, रीढ़ की हड्डी में मेरे गैप है, नस दबी है, उस वजह से ब्लड का संचार पूरे बॉडी में नहीं हो रहा है, दर्द होता है। विटामिन डी की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, 6 पॉइंट पे है, और शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, तो थकान लगती है, पूरे बॉडी में दर्द होता है, पैर के तलवे में बहुत भयानक दर्द होता है, जैसे लगता है कंकड़ चुभ रहा है, हाथ पैर में कुछ करने का मन नहीं करता, मन होता है यही कि हमेशा ऐसे बिस्तर पे आँख बंद करके पड़ी रहूं, और गुस्सा भी बहुत आती है। जब अंदर से कमजोरी है, सेहत ठीक नहीं है, तो कोई बोलता है बहुत गुस्सा लगती है घर में। अब काम करना ही करना है, तो जब हिम्मत नहीं, शरीर साथ नहीं देगा तो काम कैसे कर पाएंगे। किसी दिन खिचड़ी बन जाती है, किसी दिन रोटी सब्जी बन जा रहा है, जैसे तैसे करके खाना बन रहा है। यही रायता बनाई हूँ, वही खा रही हूँ। कोई देने वाला भी नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है। हस्बैंड को तो एकदम बिल्कुल टाइम नहीं है, इसी में राशन पानी भी बनाना रहता है जो ख़त्म है। बच्चे बाहर हैं, वो लोग का भी डिमांड है, राशन नहीं है भेज दो। अब कौन बनाए, कौन भेजे। परिवार तो बहुत है, पर गांव में है वो सब मुझसे मतलब नहीं रखती, मुझे देखना ही नहीं चाहती। सबसे छोटी हूँ देवरानी जेठानी में ना, तो छोटों का कोई अहमियत होता नहीं है।
शुगर बीपी वैसे जानलेवा बीमारी है, और विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो गई है, वो भी जानलेवा खतरनाक बीमारी है। अब बताओ क्या करूं, कैसे जीऊं। एक बार इतनी अंदर से झुझुलाहट होती है कि क्या बताऊं, कि आज मैं सब परिवार को इतना सेवा की और इतना काम की, और उन लोग का तांडव भी सही, आज वही देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती। उसी वजह से आज मेरा शरीर एकदम नाकाम है, काम ही की वजह से इतना काम करवा दी हैं ये लोग। धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी दोनों हो रही है। और जितनी बीमारियां हैं वो पूरा जीवन कभी साथ छोड़ेंगी नहीं। ना, जब तक जिंदा रहूंगी ना शुगर जाएगा, ना बीपी जाएगा, ना कोलेस्ट्रॉल जाएगा, ना रीढ़ की हड्डी में जो गैप है वो ही जाएगा। परहेज करो, परहेज करो, सब डॉक्टर बताते हैं। किसी के घर का सिचुएशन थोड़ा ना डॉक्टर जानेंगे, उनको जो जो बोलना रहेगा वो बोल देंगे, तो बता देंगे। दवा खाना है तो यही रायता खा रही थी, दवा खाने जा रही। हाँ बहन, शुगर बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वही चीज़ सोशल मीडिया पे जब मैं आई थी तब इतनी दिक्कत नहीं थी मेरे शरीर में। धीरे 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 करके सब गिरता चला जा रहा है। तो इसीलिए मीडिया पे काम। थैंक यू चाची जी, लाइक डन, स्वागत है आपका, प्रणाम। और बताइए कैसी हैं। जाने दो बहन, अपने कर्म का फल मिलेगा। हाँ ये तो सही है सबको। अरे जब मिल जाए तब तो। कैसी हो बहनी? अरे चाची मत पूछो, जैसे कल थी वैसे आज भी, जैसे परसों थी वैसे आज भी। वही तो, जब मैं चली जाऊंगी तब उन लोगों को कर्म का फल मिलेगा, तब फिर कौन देखेगा। जीते जी देख लूँ ना। वैसे तो पा रही हैं वो लोग, पा रही हैं, पर पैसे का अकड़ है ना, पैसे का अकड़ बना हुआ है। तो जो आदमी बोलते हैं रस्सी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाता है उसका, वही है। अंदर से सभी जल रही हैं, पर जो ऊपर से ना दिखावापन है, पैसे का नाज है, वो नहीं जा रहा और ना जीवन में जाएगा, जीवन में जाएगा भी नहीं। मंजू बहन आ गई हैं, लाइक डन, स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। ऐड आ रहा है, थैंक यू। फुल वॉच कर लीजिए मेरी सिस्टर, फुल वॉच कर लीजिए। देखिए अभी आज खिचड़ी बनाऊंगी, कुछ करने का मन नहीं करता, खड़ी होकर किचन में रोटी बनाने का मन ही नहीं करता। पैर में इतनी दर्द होती है, थकान होती है, क्या करूं। इसे ऐसे जी जी के एक एक दिन काटना है। ये नहीं कि पैसा नहीं दर्द हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, लेकिन क्या करें।
4 जेठानी है ना, चारों एक से एक हैं, अपने आप को अप टू डेट एकदम बुजुर्ग हैं। बूढ़ी हो रही हैं धीरे धीरे, 2 तो एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं, 2 वो भी छोट परिवार से आई हैं, छोट घर से हैं, तो इसलिए जब यहाँ अपना देख रही हैं, पा गई, जय श्री राम जय श्री राम, तो शरीर में अकड़ जकड़ सब आ गया है। बच्चों सर्विस कर रहे हैं, तो इसलिए और उन लोगों का मनोबल ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है। जय श्री राम मंजू बहन, जय श्री राम। आप लाइव में आई, बहुत अच्छा लगा। अब यही जो बहनें आती हैं, मुझे समय देती हैं, अब उनको ना टाइम दूँ तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लगा लीजिए झाड़ू चाची, झाड़ू लगा लीजिए, जिसको काम जो करना है सब लोग कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए, हम भी चले हैं धीरे धीरे। अभी नहाऊंगी, अभी लेटी हूँ। एक काम करती हूँ तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर एक काम करती हूँ, फिर आराम करती हूँ, ऐसे करके मेरे घर आजकल काम हो रहा है। अरे बाबा, दवा खाओ, आराम मिल जाए तब तो तकलीफ नहीं होता। थैंक यू। आपके घर में तो बहू भी है, फिर आप काम क्यों करती हो? मेरे घर में बहू नहीं है, मेरे घर में बहू नहीं है, जेठानी लोग की बहू हैं। अपने मैं परिवार से दूर हूँ, परिवार के साथ नहीं हूँ।
पहले थी, पहले रहती थी, परिवार के फैमिली के साथ थी। आज 13 साल से मैं उन लोगों से अब दूर हूँ। ओके सिस्टर। हाँ, बहू नहीं है, मेरे बच्चे बाहर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी किसी का शादी नहीं की हूँ। बस कहीं सेट हो जाए तब फिर शादी करूँ, पर मेरे बेटे नहीं हैं। थैंक यू मंजू बहन, थैंक यू। शादी के भी कोई पता नहीं होता सिस्टर, नसीब का कोई बहू साथ में रहे या ना रहे। आजकल तो सब लोग यह चाहते हैं हम अलग रहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो एकदम, ये तो सही है। शरीर में बीमारी ना रहे ना, तो आदमी अपना धीरे धीरे करके अपना काम स्वयं उतना कर लेगा, बना खा लेगा। खैर काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं घर में औरतों के लिए, लेकिन अगर शरीर सही रहता है तो आदमी अपना धीरे धीरे कर लेगा सारा काम। और जब शरीर ये नहीं साथ देता तो उसमें चिड़चिड़ापन भी बन जाता है, गुस्सा भी आती है। पैसा देने पे भी काम नहीं होता है, पैसा किसी को दे दो तब भी वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, पीछे पीछे दौड़ो। तो जब हमारी एक बहू है, वह भी हमें हमारे साथ में रहते हो अलग रहती है, वह नीचे रहती है और हम ऊपर रहते हैं, काम करना पड़ता है बहन, क्या करें, नसीब की बात है। वही चीज़ है, वही चीज़ है बहन। परिवार में सबसे छोटी थी, फैमिली में 4 जेठानियाँ थीं। समझ लो कि एकदम चंडी, दुर्गा, काली, भवानी वो लोग थीं। मेरे ऊपर इतना हावी थी, इतना मुझे परेशान की, और मैं इतना काम भी, परिवार लंबा था और गन्ने की मिल चल रही थी, लेबर भी खाते थे, बहुत काम किए अपने जीवन में। वही सब आज खाने को भी उतना अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जब सब खा लूँ तब खाओ, वही पुरानी परंपरा लेके चलती थी। और शरीर भी साथ ना दे और बच्चे भी साथ ना दें तो कितना बुरा लगता है सिस्टर, बहुत बुरा लगता है मंजू बहन, बहुत बुरा लगता है। आज मन बहुत दुखी है, आज मन बहुत दुखी है, क्योंकि दवा खा रही हूँ, आराम नहीं मिल रहा है जी। आज 4 दिन तीसरे डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। इतना पैसा रहे और कहाँ दौड़ो, किस डॉक्टर के पास जाओ कि ठीक हो जाओ। 500 1000 के नीचे कोई फीस नहीं लेते हैं डॉक्टर। और मैं अभी भी किसी को कोई कष्ट हो जाता है, तकलीफ़ हो जाता है, घर में कोई चीज़ घट गया, बढ़ गया, तो मेरे हस्बैंड के पास चले आते हैं।
लेकिन अब मुझे गुस्सा आती है, कोई आए तो मैं भगा दूँ। मुझे मुड़ के ना कोई देखती है ना किसी का बच्चा देखता है। सबके पास पैसा, सबके बच्चे कमा रहे हैं ना, तो बड़ा नाज है सब पे। ये सब लाइव पे बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन जब मन दुखी होता है आदमी कहाँ जाए, किससे कहे, तो वो अंदर से अपने आप निकल जाता है। 10-12 महीने हो गए मुझे, अभी तक पैरों के दर्द में आराम नहीं मिल रहा। इतनी दवाई खा ली। अच्छा, हाँ, पैर की दिक्कत तो आप बहुत पहले से बता रही थी कि पैर में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, तबीयत नहीं सही रहती। आप भी लाइव पे बोलते हो। अब इधर नहीं जा पाती बराबर कंटिन्यू, उधर तो बराबर कंटिन्यू आपकी लाइव में आती थी सपोर्ट करने। इधर तो किसी के लाइव में जाने का मन ही नहीं करता, मोबाइल चलाने का मन नहीं करता बहन। देखिए, जब अंदर से खुशी रहती है तब सब कुछ करने का मन करता है। ऐड आ रहा है, अच्छा। जब अंदर से तकलीफ़ रहता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और घर में अकेले रहते हैं, इसीलिए जो है सोशल मीडिया से जुड़े थे। ऐड आ रहा है, अच्छा, फुल वॉच कर। थैंक यू। लाइक कर दिया हूँ। ठीक है बाबू, ठीक है। सही बात है बहन, एक दूसरे से बातचीत करके टेंशन फ्री हो जाते हैं। सोशल मीडिया भी हमारा परिवार है, बिल्कुल परिवार है बहन। मुझे इसमें ना सोशल मीडिया से मुझे बहुत अच्छे बहन मिले, भाई मिले, जो अपने होके, अपने खून के होके स्वार्थी हो जाते हैं और हो गए तो ये कौन सा रिश्ता है। बस यही प्रेम से 2-4 बातें बोल देते हैं हम लोग, एक दूसरे का थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, अपने दिल की भी बातें जो अपने खास होते हैं उनसे बोल देते हैं। सबसे बड़ा धन है शरीर, सबसे बड़ा धन शरीर है मेरे समझ में बहन। सब लोग पैसे के लिए सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत कम है। अगर रोजी रोटी चल रही है अच्छे से, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, कर्ज में ना हो, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस ना हो, और सेहत सही हो, तो समझ लो उतने में खुश रहना चाहिए। अगर सेहत नहीं सही है आपके, आप पैसे पे डेली सो, तो सब बेकार है, वो सब बेकार है। ईश्वर बस वही है कि रोजी रोटी चलाता रहे, खाने पहनने की कमी ना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना आए,
शादी ब्याह करके अपना जीवन अच्छे से गुजर जाए, वही जो सबसे बड़ा धन है। और पैसा ही धन नहीं है। जो महल में पैदा हुए हैं वो भी वहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। और जो झोपड़ी में रह रहे हैं वो भी वहीं जाएंगे, कुछ साथ में नहीं जाएगा। पर जिसका जीवन खुशी खुशी चल रहा है, बीत रहा है, वही सबसे बड़ा धन है। थैंक यू चाची। झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा लो। मंजू बहन से बातें हो रही है, मेरी मंजू बहन बातें कर रही हैं। ये भी बहुत दिक्कत में रहती हैं, परेशान रहती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लग गया क्या झाड़ू? घर में झाड़ू लग गया? अजय बाबू कहाँ चले गए आप? अजय बाबू कहाँ चले गए? ऐड वाली लाइव जो मैं चला रही हूँ ना, उसमें आप अगर हिंदी में कमेंट करते हो तो इंग्लिश में लिख के आता है, उसका ट्रांसलेट करना बहुत कठिन है। वो बाबू कैसे सही करें? वो बहुत कोशिश की, सही नहीं कर पाई, सही नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे बैक वाली मोबाइल से भी कमेंट देखना पड़ता है, तभी मैं जवाब दे पाती हूँ। लाइक कर दिया हूँ। अच्छा अच्छा, लाइक करने गए थे बाबू। जो है ना, जो आप देखिए हिंदी में कमेंट कर रहे हैं, लिखे हैं लाइक कर दिया हूँ, तो मैं बैक वाली मोबाइल में मुझे हिंदी में दिख रहा है। बात सही है बहन, हाँ बिल्कुल वही चीज़ है प्रतिमा बहन, वही चीज़ है। नानी नमस्ते। ओ नानी जी बोलिए। सविता चाची आपसे जो है नमस्ते कर रहे हैं बाबू, फ़ोन करके दिखा लेना माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपको तो बताया था ना मैं। अरे वो नहीं, ऐड आ रहा है दीदी। अच्छा अच्छा, वो पता नहीं कैसे इंग्लिश में लिख के आ रहा है बाबू, उसका ट्रांसलेट करना बड़ा कठिन है। और तो ऐसे इंग्लिश में जो कमेंट भेजते हैं पढ़ लेती हूँ। बाएं हाथ वाला जो सेटिंग है उसको टच करिए, कीजिए डब्बा, हिंदी में आने लगेगा। बाएं हाथ पे जो डब्बा है, अच्छा टच कर दी, तो फिर अब क्या करूं? नहीं समझ पा रही हूँ। नीचे वाला जो तीसरा ऑप्शन है उसको बंद कर दीजिए, डब्बा हिंदी में आने लगेगा। तीसरा वाला ऑप्शन, 1 2 3 सुपर चैट, जो लिखा है सुपर चैट मेंबरशिप, नहीं समझ पा रही हूँ। सब लोग हमें ज्वाइन कर लो, आपको रिटर्न कर देंगे। मंजू बहन से जुड़ जाइए, दूसरी वाली मोबाइल मुझे फ़ोन कीजिए, दूसरी वाली। अच्छा अच्छा, कर रही हूँ फ़ोन कर रही हूँ, कर रही हूँ फ़ोन। अरे बाबू, देखें अगर नंबर होगा तभी तो कर पाएंगे। दूसरी वाली मोबाइल में अगर नंबर होगा तभी तो कर पाएंगे। वैसे तो नंबर होना चाहिए, नंबर तो होना चाहिए। देख रही हूँ। वो इंग्लिश में आता है ना, इसलिए दूसरे दोनों मोबाइल जहाँ जाओ साथ में ले लेके चलो।
बड़ी दिक्कत लगती है मुझे। देखिए मिला रही हूँ, कहाँ लगता है, घर पे ना लगे। बाय बाय मेरी बहन। ओके लक्ष्मी सिस्टर, अब किसी और को थोड़ा सपोर्ट कर दें। हाँ हाँ बाबू, खुश रहा बेटा। ई- अरे वो सुपर चैट चलत बा, देखला वीडियो कॉल करा। दिखाई अब दिखा मोबाइलिया किसे? अरे दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, देखिए। बाहर वाले में काला काला दिखा था, काला काला दिखा था। अच्छा अच्छा। ऑन हूँ बहन, ऑन रहो ऑन रहो। जय श्री राम जय।
थैंक यू राम जी। स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। बने रहिए, कमेंट करते रहिए। दूसरे मोबाइल से बात किसी से हो रही है, आप कमेंट करिए।
हाँ, बाय बाय चाची, जा रही हैं? अरे आवाज़ नहीं दे रही थी, बात हो रही थी बाबू से, अजय बाबू से बात हो रही है फ़ोन पे। बाय बाय। थैंक यू वर्मा जी, थैंक। राम राम अरे मेरी पिंकी बहन आ गई बहुत दिनों के बाद, भाई मेरी लाइव में आई हैं। लाइक को लाइक कर दो, स्वागत है आपका, हार्दिक वंदन अभिनंदन है पिंकी सिस्टर। और बताइए क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसी हो? हेलो लक्ष्मी दीदी, कर देना, हम आपको कर देंगे। ठीक है पिंकी सिस्टर, कर दूंगी सपोर्ट। पर यही जो शेफाली की आईडी जा रही है, शेफाली की आईडी जा रही है मेरे लाइव में, देख रही हो ना? तो इसी से सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेन आईडी से जिसका सपोर्ट करो कहीं फ़ोन आ जाता है, कहीं कोई आ गया तो बैक होना पड़ता है। और इस आईडी को लगा दूंगी तो पूरा चलता रहेगा, बीच बीच में कमेंट कर दूंगी। लक्ष्मी दीदी हमारी 11 से 1 तक चलती है। अरे जानती हूँ, देखती हूँ, आपकी लाइव चलती है, जानती हूँ। आप हमें सपोर्ट कर देना, हम आपको कर देंगे। अच्छा, आपका गूगल पिन आ गया? गूगल पिन आया आपका? तो पेमेंट आया होगा, गूगल पिन तो आ गया था शायद ना? गूगल पिन तो आ गया था आपका। आप हमें सपोर्ट कर देना। हाँ कर दूंगी पिंकी बहन, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब हम सपोर्ट सबका करते थे, सब हमें छोड़ दिए कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, यही सब दिमाग में रख के छोड़ दिए हमें, सब भूल गए। तो हम भी भाई भूल गए, हम भी भाई भूल गए सभी को, क्योंकि देखिए भूख सबको लगती है, भोजन की आवश्यकता सबको होती है। तो जब लोग हमें छोड़ दिए तो फिर हमें भी दूरी बनाना पड़ा, हमें भी दूरी बनाना पड़ा। जितने पुराने बहनें हैं सब मुझे छोड़ दी, सब मुझे छोड़ दी, और धीरे धीरे करके मैं भी छोड़ दी, सभी को मैं भी छोड़ दी। भैया जब कोई हमें नहीं चाहेगा, लाइक को लाइक कर दो, लाइक को लाइक कर दो।
थैंक यू पिंकी बहन। थैंक यू पिंकी बहन, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी लोग बने रहो पाँच में अभी हमारी कोई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राम राम, राम राम। ज़्यादा देर अब लाइव नहीं चलेगी। जो लोग बने हैं कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें। आधे घंटे चलाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गलिया में आए थे
निज तुम्हारी फूल बगियों में, फूल बगियों से निज तुम्हारी फूल बगियों में। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए भाई। सभी का साथ सभी का विकास होना चाहिए। सभी बहन भाई बने रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू शेफाली जी, थैंक यू। राम 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 राम।
थैंक यू। बने रहें सभी भाई बहन कमेंट
थैंक यू। जय श्री राम, राम राम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राम राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम।